Hi, hello, hi everyone. Welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are not going to solve any particular passage or any question. If you are new to the channel, of course, you might not be aware of what our videos till date have been like. But if you have been a regular visitor to my videos, so you know that in every video we have been solving previous year questions or some practice passages largely. But now in this video, based on request of a few of you guys, we are going to take a look at what should be your strategy with respect to the last 40 days for the CAT exam. Okay? It's only as of today when the video is getting published. The exam is only and only very close, just 40 days away. You might as well just count it as 1 month. ऊपर के 5-10 days तो anyway it do not matter. ठीक है? तो चलो, without any further ado, let's get started. ठीक है? But before we start, let me put out a broad description of what this video is going to be and what it is not going to be. ठीक है? सबसे पहले तो it is not a motivational video. ठीक है? Let me spell that out very clearly. Okay? क्योंकि देखो यार, ऐसे वीडियोस ना आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे. देयर आर ऑलरेडी many of them present all over the platform, present all over YouTube. ठीक है? Go on, do it, come on, इतना आपने टाइम डाला है, ये वो, यूजिंग फैंसी इंस्पिरेशनल कोट्स एंड ऑल. तो देखो, इसके लिए ना अमेरिकन इंग्लिश में देयर इज अ सेइंग. ओके, with respect to cat we must be very well versed with American English because maximum passages वही से मिलते हैं हमें, उनके अमेरिकन सोर्सेज से ही आते हैं. So there is this amazing saying in American English. This is called as blowing sunshine up your ass. ठीक है? Please do not mind my profane language. Okay, motivating somebody is often referred to as blowing sunshine up your ass. ठीक है? So this is not a video which will blow sunshine up your ass. ठीक है? तो चलो, not a motivational video, clear cut established. Secondly, please keep in mind views are to completely personal. ठीक है? देखो, हमारा जो ये सेक्शन है VRC, ये खुद में बहुत ज्यादा एक सब्जेक्टिव सेक्शन है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है. ओके, तो होता क्या है कि there is no well defined set of rules or strategy which are going to work universally. ठीक है? Maybe one or two broad pointers which you will find, which everybody agrees with, but बाकी other than that, really whatever I'm going to say is something that has worked for me or which I believe in. इसका exact opposite भी आपको मिल सकता है. Somebody far more senior to me, somebody far better at this than me, can be giving you advice which is completely opposite of mine. Rather, I will confess it myself कि बहुत सीनियर फैकल्टीज के कुछ कुछ जो वीडियोस प्रेजेंट है ऑन यूट्यूब, उनकी जो अप्रोच है, वो जो एडवाइस देते हैं अपने स्टूडेंट्स को ऑन हाउ टू अप्रोच दिस सेक्शन, हाउ टू अप्रोच देयर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, a lot of times I find that my advice or my thinking runs exact opposite to those. ठीक है? Not every single opinion, but yes, कुछ कुछ की strategies about attempting the exam and all. तो देखो, ये सब नेचुरल है होना. Nowhere am I saying कि अरे नहीं नहीं वो लोग गलत है, मेरा सही है, बिल्कुल नहीं. Rather, to be very honest with you guys, if you can succeed following something exact opposite of what I am doing, please be the first one to reach out to me. I am completely open to such kind of discussion, completely open to such feedback. ठीक है? But keep this thing in mind. Watch whatever I am going to tell you, listen to whatever I am going to speak in this video with a very open mind. ठीक है? Blinkers लगा के नहीं सुनना है, पर्सनल नहीं लेना है. ठीक है? Because as is my habit, I am very brutally honest in a lot of cases. So whatever I am going to say actually in this video, it is not scripted. I am not reading from a script. I haven't really even prepared a lot of broad pointers. It's going to be just a few slides and I'll just see what comes with the flow. ठीक है? So that being said, as of this moment, I don't even know how long this video is going to be. ठीक है? Let's see आप कब तक जिंदा रहते हैं और मैं कब तक बोल पाता हूँ. All right. So whatever I'm going to say, once again, completely personal views. Okay, don't take those to heart. Be very pragmatic. Take what is applicable to your case as an aspirant, and just ignore everything else. ठीक है? All right. What else is it not? कि don't take this as a gospel of truth or कि नहीं ना सर, मेरा तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, मेरे लिए ये काम करता है, मैंने वो किया था, आप जो बोल रहे हैं वो काम नहीं किया. Okay, that is completely your call. Please be your own decision maker here. I am not going to give broad ज्ञान here कि चलो चलो आप सब लोग ऐसा ही करो करके. All right. And yes, another important thing to keep in mind, that this video is being made assuming some
थिंग अबाउट द पर्टिकुलर व्यूअर, और वो क्या है? द वेरी बेसिक assumption is this is for somebody who has put at least 6 months of prep or 5-6 months of prep into this exam. ठीक है? If you are somebody who started with your CAT prep as late as September, so this video is going to be practically useless for you. I'm going to be the first one to suggest to you कि please ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसे यहीं पे रोक दो, क्लोज कर दो, प्लीज गो एंड स्टडी फॉर द एग्जाम. ठीक है? क्योंकि मैं जो भी बोलने वाला हूँ, एज आई सेड, इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर पीपल हु हैव पुट इन एटलीस्ट दिस मंथ ऑफ टाइम. जून से अगर आपने मिनिमम जून से preparation start किया है, जून 2023 एज ऑफ द मोमेंट दिस वीडियो इज बीइंग मेड फॉर कैट 23 नवंबर, तो जून या मई महीने से अगर आपने शुरू किया है तो ही देखो. उसके बाद से अगर आपने शुरू किया है जुलाई अगस्त सितंबर से, तो यू वोंट फाइंड अ लॉट ऑफ यूजफुल कंटेंट इन हियर. ठीक है? तो चलो, विद ऑल दीज थिंग्स बीइंग सेड आउट, स्पेल्ड आउट क्लियरली, लेट्स सी व्हाट आई बिलीव यू शुड बी डूइंग इन द लास्ट 40 डेज. ठीक है? बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें आई वुड लाइक टू शेयर. शुरुआत में जो पॉइंटर्स रहेंगे, दोज विल बी बेसिक, वी विल नॉट बी डेल्विंग immensely into details there, but towards the end I'll be discussing about mocks and how to analyze mocks properly. उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. Of course I'm going to put the timestamps of the particular points in the description box as well as the comment section. If you are interested in only that part, simply click on it, go to that part and let me know what you think about it. ठीक है? In the meanwhile, if you like our content, please consider liking to the channel, please consider subscribing, sharing it with your friends. Okay, चलो तो स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट विच आई बिलीव, देखो जी, सबसे पहले वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच, बहुत ज्यादा नफरत है मुझे इससे. ठीक है? होता क्या है कि ऑल अक्रॉस यूट्यूब और इवन इन द केस ऑफ मेनी मेनी ट्यूटर्स, यू विल फाइंड कि बहुत जेनेरिक, बहुत ब्रॉड एडवाइस दी जाती है. हाँ, चलो चलो ये कर लो, चलो चलो वो कर लो. आई ऑलवेज क्वेश्चन दिस कि देर आर दिस ईयर 3 lakh aspirants have filled the form. Assuming that 2 lakh are not serious, may not come to the exam, whatever, but still we can safely assume that there are going to be 1 lakh people who are going to prepare and give this exam with at least some kind of seriousness, right? So how can some piece of advice, no matter how basic it be, applicable to 1 lakh people? Imagine the diversity where people come from. In my home state Maharashtra, I have students who come from really Marathi background. ठीक है? They have studied in vernacular language for about 10-12 years of their education. ठीक है? तो ऐसे केस में how can we say चलो आप ये कर लो? The advice that I can give to them is going to be very 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 different from somebody who has been studying in really good English medium background, is a habitual reader, very comfortable with the language. तो उनके लिए VRC का game is going to be completely different. So for me, clear cut, my answer is always going to be no. That is why I generally refrain from making videos like this also. Okay, last 40 days, what to do, last 50 days, what to do, strategy in exam, this, that, and all. Unless I know you personally as an aspirant, I find it really bullshit. Okay, I'm not mincing any words here. I find it completely bullshit to give out any kind of advice. ठीक है? ऐसे भी यूट्यूबर्स है जो बहुत क्लिकबेट टाइप चैनल्स और खुद के क्लिकबेट टाइप यूट्यूब के वीडियोस के थंबनेल्स बनाते हैं. ओके, 3 months to 99 percentile एंड ऑल. फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत मन है मेरा टू कॉल देम आउट हियर, बट आई डोंट वांट टू गेट कॉट इन स्टूपिड फ्यूड्स, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा किसी का. बट प्लीज कीप इन माइंड, सच वीडियोस आर नथिंग बट क्लिकबेट. वो जो इंसान वो वीडियोस बना रहा है, उसकी आप बस कमाई बढ़ा रहे हो और अपना समय वेस्ट कर रहे हो. थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होकर, थोड़ा सा एडल्ट की तरह सोच के देखो एग्जाम को लेकर कि आईएम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इस एग्जाम को खुद का एंट्रेंस मान के चलते हैं. ओके, ऑफ कोर्स द जीडीपीआई पार्ट आल्सो कम्स इन लेटर, बट this exam is the first step towards admission in those prestigious colleges. Do you really think they are going to make the exam something as lame as that you will be mastering some part of it in just 3 months? Okay, please give the exam some kind of respect. Okay, anyway, getting to our discussion over here. So if one size does not fit everybody, then how should you think कि आपके लिए क्या applicable है, आपके लिए क्या नहीं है? So when it comes to VRC, okay, broadly speaking, हम जो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, it is going to be with respect to VRC only. Some pointers might be applicable to other sections also, but given that I am not a subject matter expert in LRDI and quant,
yet. Okay, God willing, maybe one day that as well. But maximum of the points that we are going to discuss applicable to only VRC. ये बात आपको ध्यान में रखना है. Okay. तो VRC में what do I recommend is I recommend a split. कि आपने आज तक क्या आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट 10-15 मॉक्स तो दिए होंगे, नो मैटर हाउ वेल यू और हाउ बैडली यू फेयर्ड इन देम, बट देखा तो है, मॉक्स की शक्ल तो देखिए, आई एम अज्यूमिंग दैट. ठीक है. तो अगर आपके मॉक्स में कंसिस्टेंटली लेस देन 15 अगर आया है VRC, 15 मार्क्स, ठीक है, आपने जितनी भी मॉक्स दी 10 12 14 15, मे बी वन आउटलायर हियर एंड देयर, बट डोमिनेंटली 80-90% ऑफ द केसेस मे बी your VRC is a weaker section, so you have scored less than 15. Then on the other side of the spectrum, you might be somebody who is either naturally very good at VRC, या फिर you have become really good at VRC with due amount of practice. तो पकड़ के चलो आपने 25 या फिर even 30 प्लस मार्क्स अगर आप कंसिस्टेंटली लेकर आ रहे हैं, ठीक है, you lie on the other side of the spectrum. And then in between also lies this crowd जिनका 15 से 25 मार्क्स के बीच में स्कोर वैरी होता है. ओके. So it is clear cut signal that the advice that is going to work here is absolutely useless over here, and vice versa, whatever is going to work here absolutely horrible for people with less than 15 marks. हो रहा क्या है यहाँ पे, दिस हमारे जो डोज है उनका मैं एग्जांपल लेता हूँ. सो क्या होता है ना, इमेजिन करो यहाँ पे, आई विल गिव अ वेरी रेगुलर जिम गोइंग एनालॉग. ठीक है. Imagine that you're a beginner in a gym like this, and there is also already a very buff guy who comes to the gym and does it very well, a proper typical gym bro over there. तो आप देखते हो भाई ये बंदा तो सीधा 25 kg डंबल्स का बाइसेप्स कर रहा है, ही इज बेंचिंग 150 kgs एंड ऑल. तो यू डोंट गो एंड टेल दैट गाय कि डूड व्हाट इज योर प्रोसेस, आप क्या खाते हो बताओ, मैं भी उतना खाऊंगा, मैं भी उठाने लगूंगा उतना. एब्सोल्युटली नॉट. So what went wrong here? What you're doing is, as an absolute beginner, or even somebody with a weak section, what you're doing is you're looking at this crowd, getting a bit envious of them maybe, and trying to get a shortcut to achieving this kind of score. What you should rather be asking is कि आपने क्या किया ऐसा. This guy should be asking at max this guy कि what did you do? What was the process that you followed to reach this mark? Now there might be a few people who are naturally good at this section, तो उन्होंने शुरुआत ही यहाँ से की होगी इस जोन से, so they might not be able to consciously help you out there. But there are many people who started in this zone and end up in this zone by the time exam comes, which is an immensely solid improvement. ऐसे लोगों से आपने बात करना चाहिए, and don't ask them कि वो आज क्या करते हैं, कि dude what do you do, how many mocks do you solve, what is your strategy in exam. Hell no, please don't do that. What works for this guy is absolutely horrible for you. What you should be asking this crowd is, what you should be asking this pehelwan in the gym is, what was the process that you followed? Maybe you were a beginner like me once upon a time. What was the journey that you did? What was the process that you followed? Focus on the process, man. Okay. Don't focus on the end result. Don't focus कि वो आज क्या करता है. जो वो आज कर रहा है वो आपके लिए यूजलेस है. उसने आज तक क्या किया, कितनी अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस की, क्या माइंडसेट रखा है, दैट इज गोइंग टू मैटर. ओके. अनदर थिंग टू कीप इन माइंड, people who have been consistently locked up in this zone less than 15 marks, please keep in mind आपके लिए sectional cutoff पहले निकालना ज्यादा important. When you talk to these guys and try to emulate their strategy, it is going to backfire really badly. Why? Because these guys are attempting the mocks with a lot of risk taking approach रहता है इन लोगों का. Okay. Okay. So please keep in mind that one size fits all approach does not work here. These guys are going to approach the exam with थोड़ा सा risk taker वाला mindset. Okay, because they are already perform really well. Sectional cutoff निकालना उनकी चिंता की बात mostly नहीं रही. But आपके केस में, if you are locked up in this zone, let's say call this as zone 1, zone 2 and zone 3. So if you are somebody locked up in zone 1, तो आपके लिए major concern अभी maximizing score नहीं होना. What you should be aiming right now practically is कि how can you get your sectional cutoff clear. क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, if you come from general category and you are really aiming to get into good colleges, top 15, top 20 in the country, so anywhere near 80 percentile in sectional cutoff, 80 percentile आपको निकालना ही निकालना. ठीक है. So at less than 15 marks, the hopes of that happening start to look really difficult.
सो कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट बट ऑल्सो डोंट गो ओवरबोर्ड इन इट. सही इंसान से बात करो रादर देन टॉकिंग टू पीपल हु आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्कोर इन द एग्जाम. टॉक टू योर मेंटर, टॉक टू योर फैकल्टी कि सर मैम देखिए दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग. Discuss your mock strategy with them. Try to figure out your own weak and strong areas. That is why there is another thing, very controversial opinion which I hold is कि expert लोग जो YouTube पे live mock solving वगैरह करते हैं, तो that is generally helpful for people again in zone 3. ठीक है. बट zone 1 गाय जो ऑलरेडी थोड़ा शेकी फाउंडेशन पे काम कर रहा है, वो इस तरह के वीडियोस देखता है ना, तो हेवी पोटेंशियल फॉर गेटिंग मिसलेड. So not appropriate. So ठीक है, we cannot stop content creators from putting out videos like this. After all, there is a demand for videos like that. तभी जाके लोग बना रहे हैं. But if you are somebody, फिर ये कोई भी section के लेके बात हो. Maybe you are caught in zone 1 for LRDI. Maybe your quant is on the weaker end, तो आप less than 15 ही लेकर आ रहे हो quant में consistently. So if you are somebody like that, refrain from uh, doing what experts are doing. ठीक है. Try to follow your own journey. Try to keep to yourself. Try to figure out your own strength and weakness. ठीक है. Do not speculate. Avoid speculation. And also another very important thing to keep in mind at this stage, please keep in mind that it is not a team sport. जो आपकी पढ़ाई है, जो आप कर रहे हो, तो a lot of times I see my own students indulging in group studies of sort. 3-4 बंदे या बंदियां मिलकर साथ में पढ़ाई करते हैं. Then they discuss कि आज तूने कितना किया, इस प्रॉब्लम में मुझे डिफिकल्टी गई वगैरह वगैरह. While all that is admirable, maybe it helps you be in the zone of studying and dedicated mindset. But always keep in mind कि यार ये एग्जाम ना टीम स्पोर्ट नहीं है. It's a completely singles match. ओके. क्रिकेट का नहीं है ये गेम जहाँ पे आपको सब लोगों को कोलैबोरेट करके करना है. इट्स लाइक वन गाय प्लेइंग टेनिस और बैडमिंटन अगेंस्ट द एग्जाम सेटर. दैट्स इट. ठीक है. तो वैसी माइंडसेट रखो. थोड़ा सा खुद की पढ़ाई करो और खुद की पढ़ाई के हिसाब से डिस्कस थिंग्स, relevant things, not with your peers but with your faculty. A faculty, a good experienced faculty must have seen hundreds or even thousands of students go from their supervision over the past few years. ठीक है. तो उन लोगों से आप बात करो. डोंट टॉक टू योर फेलो एस्पायरेंट जो खुद शायद पहली या दूसरी बारी काट दे रहा है. वो आपको क्या हेल्प करेगा. ओके. So please have a very pragmatic, please think like an adult here and follow this thing. All right. So that takes care of my first gyan to you regarding what you should be doing in the last 40 days. Rather not be doing is कि one size fits all approach मत believe करो. Focus on your own dedicated approach. Determine करो कि when it comes to VRC, whether you are a zone 1, zone 2 or zone 3 guy, talk to your own mentors or faculty regarding your approach in the exam. I will refrain from giving out broad ज्ञान here कि अच्छा आप less than 15 वाले हो तो क्या करना चाहिए, 30+ वाले हो तो क्या करना चाहिए, because I do not know you as an aspirant. But if you would like to know more or if you would like to have my input regarding your approach, so feel free to drop me a mail on this mail ID of mine. I'll jot it down here. At the end of every video, I generally share it with you, but अभी बता देता हूँ vrc.gaurav@. ठीक है. इसके ऊपर आप ड्रॉप कर सकते हो और यू कैन इवन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर ओपन टू शेयरिंग योर परफॉर्मेंस टू विद द पब्लिक. ठीक है. तो चलो विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट. Okay, coming to the second point now, strength over weakness. Very self-explanatory point actually. कि at this stage now, जहाँ पे अभी आखिरी के 40 days बचे हैं सिर्फ, तो देखो, for almost every aspirant out there, unless you are some kind of prodigy or a genius, everybody is going to have 1 or 2 sections which are really very strong and one section which is going to be on the weaker end. ठीक है. So if you are a typical male engineer ना, if you're a typical gem guy or even an engineer male guy, तो आपका VRC की बैंड बजी होगी. ये एक बहुत जेनेरिक सा आई नो स्टेटमेंट में दे रहा हूँ. एज अ VRC ट्यूटर आई शुड रियली स्टे अवे फ्रॉम जनरलाइजेशन, बट अभी इतने बार देख लिया ये होते हुए कि आई फील फेयरली कॉन्फिडेंट अबाउट मेकिंग दिस रिमार्क. ओके. कि अगर आप एक इंजीनियर बंदे हो और एक बंदे ही हो, ठीक है, तो VRC जनरली आपका वीकर एंड पे रहता है. क्यों? क्योंकि नहीं दिया होता है उतना टाइम एफर्ट जो लगता है उसके अंदर. एनीवे, नॉट दैट पार्ट ऑफ डिस्कशन नाउ. कि स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर अभी आपने फोकस करना चाहिए.
सम एस्पायरेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि अच्छा चलो ठीक है, हम कितने दिन पढ़ते हैं घर में, ओके वी स्टडी फॉर 10 आवर्स, ठीक है जी, ऑल राइट, आउट ऑफ दिस 10 आवर्स विल स्पेंड 6 आवर्स ऑन अ वीकेस्ट सेक्शन, ओके, मे बी लेट्स से इन योर केस इट इज एलआरडीआई, तो भैया हम 6 घंटा एलआरडीआई की सेट्स कर रहे हैं, एंड देन फिर क्या किया, तो 2+2 आवर्स हमने वीआरसी और क्वांट को दे दिया, और हो गया हमारा डे ओवर, ऑल राइट। सुनने में तो ऐसा लगता है, देखने में बाप रे कितनी मेहनत कर रहे हो, वाओ अमेजिंग, 6-10 घंटा पढ़ाई चल रही है, 6 घंटा आप एक एक सेक्शन को तोड़ने पे पीछे लगे हो। प्लीज कीप इन माइंड, मेरा बिलीफ है एट दिस स्टेज, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है, प्लीज ऑनेस्टली। वाई? क्योंकि आखिरी 30-40 दिन में मिरेकल एक्सपेक्ट करना आपके वीक एरिया में इज चाइल्डिश बिहेवियर इन माय ओपिनियन। रादर प्ले द गेम टू योर स्ट्रेंथ्स। अगर आपका वीएआरसी और क्वांट बहुत अच्छा है, तो उनको और पुश करने की, उनको और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि एलआरडीआई पढ़ो ही मत, या फिर वीकेस्ट सेक्शन पढ़ो ही मत, आई एम नॉट सेइंग दिस। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसा ऐसा पैरिटी वाला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। व्हाट इज दिस 6-2-2? दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बैठ रहा है इनका, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। Rather, what you should do is, in my opinion, in this situation is, if your LRDI is a weakest area, so have some pragmatic outlook, dedicate 3 hours to LRD. Okay. To be very honest with you, मैं तो actually घंटे भी काउंट करने के खिलाफ रहता हूँ. What I try to focus on is the quality of preparation rather than the quantity. But anyway, need some parameter to discuss or decide about something. So do 3 hours LRDI, and then maybe या फिर 3 or 4 hours of LRDI करो, and then 3 hours of quant, 3 hours of VRC करो each, एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर। ऐसे परफॉर्म करो वीआरसी और क्यू में, इतना बढ़िया परफॉर्म करो दैट यू गेट 30 and 30 ईच मिनिमम देयर, सो दैट अगर एलआरडीआई में समझ लो आप कहीं ना कहीं 20-25 रेंज में भी कहीं लॉक हो जाते हो, तो भी योर ओवरऑल स्कोर इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड, ठीक है। आई एम एक्चुअली वंस अगेन ऑल्सो क्वाइट अगेंस्ट स्पेकुलेशन लाइक दिस कि 30-30 लाना, फिर उसमें 25 लेके आ जाना, अच्छा अब तो तुम्हारा स्कोर 85-90 आ गया, अरे बल्ले बल्ले, आप तो 99 परसेंटाइलर बन गए हो, हॉरिबल होपलेस थिंग, ओके। आई ऑल्सो स्ट्रांगली डिस्करेज यू फ्रॉम इंडल्जिंग इन स्पेकुलेशन लाइक दिस, बट फिर भी अगर एक कोई प्रैग्मेटिक आउटलुक रखे यहाँ पर, तो दिस थिंग इज रियली रियली हॉरिबल, ये इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट यू शुड बी गोइंग फॉर इज अ मोर पैरिटी, मोर इक्विवेलेंस इन योर स्टडी, बिकॉज नो miracles are going to happen in the last 40 days। अगर आप 6 महीने से, मिनिमम 6 महीने से, यू माइट बी somebody preparing for this exam for the past 8-10 months, and अगर आपका ये सेक्शन कंसिस्टेंटली वीक रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ वन रीजन और दी अदर, कि शायद आपने इसकी पढ़ाई की ही नहीं, या फिर आप नेचुरली इसमें वीक हो, या फिर अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू गेट अ गुड मेंटर, बी इट एलआरडी और बी इट वीआरसी व्हाटएवर, तो अब आपको क्या लगता है आखिरी 40 दिन में आप क्या ही ऐसी फाइट मार लोगे, ठीक है। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ योर स्कोर बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन रादर देन वीकनेस। एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ में आपका वीक एरिया करो। बहुत ही ज्यादा अगर कमजोर है तो डेफिनेटली इतनी मेहनत करो कि एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए अच्छे से, बट अनड्यू अमाउंट ऑफ अटेंशन, अनड्यू अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होते हैं फिर, तो वैसा मत करो। इट विल टैम्पर विथ योर टेम्परामेंट विच इज वेरी वेरी हार्मफुल एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इट्स नॉट गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव, but the amount of calm, quality, practical mindset which you take into that exam hall, that is going to yield dividends. All right. So that being said, second point, once again emphasizing, focus more on your strength than your weakness at this stage now. ठीक है? तो चलो then, that done. Let's move on to the third point. All right, coming to the $1 billion question now, as far as VRC is concerned, तो बहुत जनता स्पेकुलेट करती है, बहुत जनता पूछती है इधर उधर, यार हम वीआरसी में से वीए पे ज्यादा फोकस करें क्या आरसी पे ज्यादा करें। तो ऑफ कोर्स देयर आर कॉम्पिटिंग कैंप्स लाइक दिस, एज यू कैन सी इन दिस मीम दैट आई मेड ओवर हियर, दैट या आई एम पर्सनली मोर ऑफ अ कैप्टन अमेरिका गाय टाइप गाय हियर, आई एम मोर ऑफ एन आरसी पर्सन, बट देयर आर पीपल हु डू रियली रियली वेल इन वीए। तो चलो ठीक है, एज आई सेड, do what floats your boat, okay, one size fits all approach नहीं possible है। तो in this case how should you decide whether VA पे ज्यादा फोकस रखे एग्जाम में या फिर आरसी पे रखे, बी इट योर प्रिपरेशन, बी इट योर एग्जाम स्ट्रैटेजी, क्या कैसे। तो ऐसे केस में इमोशंस को दूर रखो, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा। व्हाट यू शुड डू इज, पिछले अपने 15 मॉक्स, एटलीस्ट 15 मॉक्स का डेटा निकालो,
थोड़ा क्लेरिकल काम है ये, बट अज्यूमिंग कि आपने पिछले 2 महीने में 15 मॉक्स वगैरह टाइप अगर कुछ दिया है, सर्टन अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन करके, ये जो भी 15 मॉक्स आपने दिए डिसेंट प्रिपरेशन करके, नींद में से उठ के नहीं दिया है, ऐसा अगर हम पकड़ के चले, तो सिंपली उसके अंदर में प्लॉट करो आपका परफॉर्मेंस, कि आपने फॉर एनी गिवन मॉक, लेट मी मेक यू अ टेबल ओवर हियर, ऑलराइट, दिस इज आरसी, समरी, this is parajumbles, and maybe this is odd one out or fill in the blanks, whatever, अब डिपेंड करता है आपने कौन सी मॉक दी और इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है। एंड लेट्स से दिस इज मॉक 1 2 3 अप टू गो ऑन मे बी 15 20 वट एवर योर काउंट इज, ठीक है। और इसके अंदर अपना स्कोर लिखते चलो, एक्स वाई जेड वट एवर इट माइट बी, मे बी इट गोज अप मोर देन एक्स, मे बी इट गोज लेस देन वाई, वट एवर, और एक थोड़ा सा क्यूमुलेटिव एवरेज निकालने की कोशिश करो, एवरेज इन टर्म्स ऑफ कोर्स मार्क्स दैट यू गेट, एंड ऑल्सो एक्यूरेसी आपकी कहाँ पर आई है। एक्यूरेसी इन माई व्यू इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन। लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं यार निगेटिव मार्किंग को। देर आर पीपल हु गो फॉर द ब्लिट्सक्रीग अप्रोच इन एग्जाम, और क्या किया भाई, तो 10 सही आया और 10 गलत हो गए, हे भगवान ये क्या अप्रोच है। ओके, 20 मार्क क्या कर लिया, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उतने मार्क्स लेके आ रहे हो आप इन एन एग्जाम जहाँ पे हर क्वेश्चन जो सही होता है उसके 30 मार्क में 3 मार्क मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ साइन ऑफ एन इडियट, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो प्लीज डोंट बी एन इडियट लाइक दैट, लेट द डेटा डू द टॉकिंग फॉर यू, लेट द डेटा मेक द डिसीजन फॉर यू, ठीक है। आप थोड़ी सी एक क्लेरिकल मेहनत करो, आपका परफॉर्मेंस आपको ही फीडबैक दे देगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सूट क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी देखो, वंस अगेन हाउ दिस वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच डज नॉट वर्क। जैसे कि इन माय केस आई कैन से दैट व्हेन आई वाज अ फर्स्ट टाइम एस्पायरेंट, माय पैराजम्बल्स वर हॉरिबल, हॉरिबल मतलब नेक्स्ट टू हॉरिबल। इफ द आंसर इज 4 3 2 1, आई वुड मेक 1 2 3 4, एग्जैक्ट अपोजिट, ऐसे भी दिन देखे, ठीक है। तो what I did was I have been following this practice way right from the start. तो मैंने सिंपल ऐसा प्लॉट किया, खुद का परफॉर्मेंस दिख गया भाई कि 1 2 महीने में there is literally no payoff coming from parajump. My accuracy is moving in the zone of like 2 on 10 or something. Thankfully it has improved now, but yes एक टाइम पर थी ऐसे। तो वेरी वेरी सिंपल कि एग्जाम में पैराजम्बल प्रायोरिटी में मैं नहीं करने वाला, whether it carries negative marking or not doesn't matter. My payoff has been really amazing. Touch wood with respect to RC. My score in RCs moves in the range of 8 on 10 or 9 on 10 at least, something like that. तो चलो जी बिल्कुल एग्जाम में हम इस पे फोकस ज्यादा करेंगे। समरी में भी माई पे ऑफ मूव्स इन द जोन ऑफ 2 on 3 और 3 on 3, विच इज अगेन वेरी एनकरेजिंग। तो माई प्रायोरिटी बिकम्स वेरी क्लियर इन दिस केस, मुझे इमोशंस के तहत जाना ही नहीं है, मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन देखना ही नहीं है। What I'll do is in the exam is I'll go with RC, then I'll go for summary, and then I'll go for PJ. By that time, the 40-minute time span gets over, and that is more than good enough for me. Okay, you don't need to be greedy, you don't need to be emotionally inclined towards somebody, don't get into petty battles with anybody. Maybe your mentor is somebody who prefers कि भैया तुम BA ज्यादा करो, RC पे ज्यादा ध्यान दो, वाइसा वर्सा देर आर मेंटोर्स हु से कि चारों आरसीज आपने करना चाहिए, चारों पढ़ना चाहिए, जितने क्वेश्चन जमे वो करके आओ, फिर वीए भी देख लो। अभी देखो हर ट्यूटर का अप्रोच डिपेंड करता है ऑन देयर ओन आउटलुक, ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस, रादर एज आई सेड एट द स्टार्ट अगेन, वेरी वेरी सीनियर फैकल्टी एक्चुअली रेकमेंड कि आपने चारों आरसीज करना चाहिए नॉट। Personally, I differ there, but my job is not to trash what they are saying. What I'm trying to drive home is you have to determine on your end thoda sa what works for you. Maybe 4 RCs wala strategy works for you. Good. Last year I had a student whose parasamples were really remarkable. Like कहा मैं जो बेचारा 2 on 10 टाइप सफर कर रहा है, एंड कहा माई स्टूडेंट हु इज लाइक 2 on 3 एंड 3 on 3 एफर्टलेसली, लिटरली एफर्टलेस। तो ठीक है भाई, ओके, व्हेन एग्जाम कम्स डेफिनेटली सॉल्व पैराजम्बल्स विद प्रायोरिटी। अब वो कब करना है, कैसे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन his approach, that depends on the discussion that he and I had. But yes, one thing becomes clear, that is parajumble is a strong suit, and hence to not let this go in the exam at any cost. तो इसलिए आप भी अपना आने वाले 40 दिनों में 15 20 25 मॉक्स जो भी देते हो, मॉक्स रहे, सेक्शनल्स रहे, प्रैक्टिस मटेरियल में भी एक जर्नल मेंटेन करो। दिस पॉइंट आई एम रियली in a way tired of trumping my horn with my students, but बहुत कम लोग करते हैं ये, that you should maintain a journal. Okay, the power of journaling is really really underappreciated, understated, ठीक है। So that being said, once again I am telling you,
focus on your own track record, by making this journal. तो अगर अभी तक क्या आपने ये नहीं किया है, तो I strongly recommend that you plot this data for yourself and see where you stand. And of course, if you would like me to take a look at this journaling of your performance, so please feel free to drop me a mail. More than glad to take a look at it and help you out. ठीक है? तो चलो, with that, let's move to the fourth point. Yeah, coming to this point, it's actually a carry forward from the discussion that we had in the previous one. Temperament is really the key. क्या होता है, a lot of I generally see this in freshers, first time aspirant. The emotion ले आते हैं यार, section में, exam में, ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह. Boys and girls, please keep in mind, it's the last 40 days that we are talking about. Kindly keep your emotions to yourself. Okay, the exam setter, the exam, the competition, the market does not care one iota about what you feel about any particular section. You hate RCs, congratulations. Okay, please join the crowd. There are 2 lakh other people out there. Okay, but who is going to ace the exam? Somebody who does well in the RC. Whether they love it or hate it, that is of zero importance. Okay, so you did not fall in love with any part of the exam, but you need to do well in almost every section. In every department, you have to perform really well, and that is actually the hallmark of a good person. आप एमबीए करने जा रहे हो ना, यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू बिजनेस वर्ल्ड. यू कैन नॉट ब्रिंग इन योर इमोशंस लाइक ये प्रोडक्ट पसंद नहीं, मैं नहीं करने वाला इसकी मार्केटिंग. अरे ऐसे बोल के थोड़ी होगा. ठीक है, तो इसके अंदर में वन वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल दैट आई कीप ऑन कमिंग अक्रॉस इज दिस ऑब्सेशन विद पैराजम्बल्स. ठीक है, तो पीपल आर लाइक भाई मतलब पैराजम्बल्स निगेटिव मार्किंग नहीं है, हम तो पहले करके आ जाएंगे, ये हमको डर लगता निगेटिव मार्किंग से. जनता विच एक्चुअली has been held up in that zone 1 na, people who are locked up in less than 15 marks wala zone, generally these guys obsess over parajumble the most. क्योंकि इन लोगों को निगेटिव मार्किंग से ऑफकोर्स डरना ही चाहिए, और निगेटिव मार्किंग जनरली इन जनता को मारता भी बहुत है. So what they try to do is they try to get a lot of yield, they try to get a lot of payoff by focusing on parajumbles. करना चाहिए. I'm not against solving parajumbles in the exam, but when I say they obsess over it, as in कि RCs को sacrifice करेंगे and they will solve parajumbles throughout the day, and maybe they will solve 10-12 parajumbles in a day, and they'll be like अरे यार यहाँ पे 4231 था, मैंने 4321 कर दिया. आंसर वाज 4231, मैंने क्या किया, तो 4321. सर देखो ना, इतना सा मिस्टेक की वजह से, अदरवाइज मेरे और 4 सही हो जाते. आई एम लाइक व्हाट, सीरियसली एट दिस स्टेज ऐसी बातें नहीं करना चाहिए. आप डिसाइड योर प्रायोरिटी, कौन सा स्ट्रांग है, वीक है एरिया, उसको प्रैक्टिस करो. और खास करके पैराजंबल जैसा क्वेश्चन कैटेगरी विच इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर. ओके, for example, the sequence that you may have made, let us say 4321, might be really really good, and होता है ऐसा कि ऑफिशियल आंसर इज 4231, and frankly speaking both sequences are really good. हम ये बोल नहीं सकते कि तुम्हारा क्यों गलत और वो क्यों सही. अब इट इज completely up to your luck or your fate कि आपका थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग अलाइन हुआ विद द एग्जाम सेटर और नॉट. हिंदी में इसके लिए कहावत है विच आई यूज अ लॉट ऑफ टाइम इन माय क्लास, जिसकी लाठी उसकी भैंस. ओके, तो यहाँ पे लाठी कौन होल्ड कर रहा है, द एग्जाम सेटर. ओके, तो दैट गाय इज गोइंग टू डिसाइड कि सही सीक्वेंस क्या है. आपने उससे बेहतर सीक्वेंस भी बना दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट में भी जाके प्रूफ कर दिया दैट योर सीक्वेंस इज मोर लॉजिकल इन नेचर, इट कैरीज जीरो मीनिंग. ठीक है, सो प्लीज स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर पैराजंबल. और ये क्यों होता है, उसका बहुत सिंपल रीजन है, बिकॉज इट इज टीटा क्वेश्चन कैटेगरी. टाइप इन द आंसर विथ नो नेगेटिव मार्किंग, तो पीपल आर लाइक बल्ले बल्ले, सही हो गए तो अब तो जीत जाएंगे, नहीं हुए तो कोई नुकसान नहीं. This is a very childish mindset. Once again, I am telling you, the people who are setting the CAT exam, they are supremely smart. Okay, they know what a typical 20, 22, 23-year-old person is going to think like, and they're playing with your mindset over there. So be pragmatic, be smart, at least thoda sa smart. There is a reason that RC is making up 67% of that section. Okay, हम आरसी को हाथ ही नहीं लगाएंगे, हम बीए में करेंगे जो करेंगे, 5-6 क्वेश्चन सही हो गए तो हमारा कट ऑफ निकल जाता है. कहाँ से निकालोगे, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर इमेजिनिंग इज कि आउट ऑफ 8 बीए क्वेश्चन दैट कम यू विल गेट 6 करे. सीरियसली बॉस, ये कौन सा फैंटेसी है, ये कौन सा लाला लैंड है. ठीक है, तो प्लीज बी pragmatic, try to give decent weightage to
RC as well as VA. ठीक है, keep a very practical mindset, keep a good healthy temperament. Another interesting incident that I would like to share with you. ये last year हुआ था मेरे साथ में. Sort of shocking, you know. What happened actually is one of my students, once again, very good actually when it comes to quant and LRDI, really good होते हैं ना, आ जाता है सेक्शन अच्छे से, कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 30+ इन बोथ द सेक्शन, बट ऑल्सो कई महीनों से वेरी पुअर इन बीआरसी. बोल बोल कर हम थक गए कि यू नीड टू spend time on BRC, you need to dedicate specific time to it, but didn't listen. Okay, now in the last 30-40 days of the exam, she comes to me and asks कि मेरा LRD and quant तो it is assured that I'm going to do really well there. She was very sure about it. Okay, but VRC को लेकर she said that I am not feeling very confident. ओके, तो आप बताओ अभी आखिरी 30 दिन में हम क्या कर सकते हैं जिससे ये सेक्शन हमारा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा. एंड शी सेड दैट आई एम willing to put in all the hard work that is needed. I'll solve 10-12 RCs in one day. Will that help me out or not? I was like, really no. Frankly speaking, what you are trying to do is game the system. What you are trying to do is find a shortcut. एग्जाम का आप महत्व देखो, एग्जाम का क्वालिटी देखो. अगर VRC ऐसा सेक्शन होता विच यू कुड मास्टर इन द लास्ट 30-40 days, तो यू वुड हैव फाउंड 1000 मोर इंस्टीट्यूट्स आउट देयर इन द कंट्री जो आपको 1-2 महीने में पूरा कैट का पढ़ाई करके आपका 99 परसेंटाइल निकाल देते. देयर इज अ रीजन, राइट, दैट people have to spend at least 8-10 months of study, and then they can aspire to get a really decent percentile in whatever section. Okay, VRC, I mean, mother of irony here is that it carries the highest number of questions out of all three. Okay, तो सबसे ज्यादा परफॉर्म करने का भी स्कोप वहां पे है और सबसे ज्यादा सेक्शनल कट ऑफ में मरने का भी स्कोप वहां पर है. ठीक है, तो ऐसा माइंडसेट भी मत रखो प्लीज. तो इफ यू आर समबडी स्टिल लिविंग इन दिस लाला लैंड लाइक दिस गर्ल वाज कि भाई आखिरी के कुछ दिनों में हम फुल फायर पे सॉल्व करेंगे, 8-8 10-10 घंटा VRC करेंगे और हो जाएगा. Maybe 1 in 1000. I'm not denying that. Okay, as I said, uh, being a VRC tutor, I am not afraid of negative marking. I am not afraid of anything. I am afraid of generalization. है. इंटरस्टेलर में वो डायलॉग है ना, माइकल केन कहता है कि आई एम एन ओल्ड फिजिसिस्ट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, आई एम अफ्रेड ऑफ टाइम. तो उसी तरीके से आई एम VRC गाय, आई एम अफ्रेड ऑफ जनरलाइजेशन. सो ठीक है, मे बी 1 or 2 guys आउट ऑफ 1000 सैंपल सेट शायद आपका बात बन भी जाए आखिरी 30-40 दिन तक, बट फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ 990 पीपल नहीं होता ऐसा. ठीक है, तो प्लीज गेट ओवर दिस अनहेल्दी माइंडसेट, प्लीज गेट ओवर दिस अनहेल्दी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड स्टार्ट फीलिंग द रियलिटी ऑफ द गेम. आ जाओ, नीचे उतर जाओ. ओके, आसमान में मत रहो. ऑलराइट, चलो, दैट बीइंग सेड, लेट्स गो एंड लुक एट द मॉक्स वाला पार्ट. ओके, yes, my favorite part when it comes to mocks, sectionals, practice. चलो, यहाँ पर once again a controversial opinion that I'm going to throw away. मैं बहुत strongly अंदर से believe करता हूँ. There, I said it. Really. Why so? Because time and again I keep on coming across FB posts or people asking on Telegram or this, that, whatever. हजारों जगह पे discussion चलते हैं आजकल तो. When I was a first time CAT aspirant, इतने platform ही नहीं थे. The only person you could discuss a CAT prep with was your institute mentor, maybe 1-2 friends, and end of story. पर चलो ठीक है, जितना साधन उतना इंसान बड़े ख्याल देखता है, बड़ी बातें करता है. Anyway, तो there are people who say things like कि हम हर रोज एक मॉक देंगे, आखिरी 30 दिन हम 30 मॉक दे देंगे. ओके, देयर आर द पीपल आर ऑन द अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम कि हम अल्टरनेट डे मॉक देंगे, तो एग्जाम 30-20 days अवे, तो विल गिव मे बी 20-30 मॉक्स बाय देन. ओके ओके, ऑल राइट, फेयर इनफ. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, देयर फ्रेंड्स गेट टेरिफाइड एंड देन दे कम रनिंग टू देयर मेंटर्स और समटाइम्स हैपेंस हैज हैपेंड विद मी एज वेल कि सर वो तो ऐसा ऐसा कर रहा है, हमने भी ऐसा करना चाहिए क्या, should we give mocks daily? So once again, going back to our first point, one size fits all approach, does it work? Hell no.
तो कितने मॉक्स देना चाहिए? देन कम्स द सेकंड क्वेश्चन कि सर फिर कितने दे, व्हाट शुड बी अ फ्रीक्वेंसी? यहाँ पर दिस इज वेयर योर ओन माइंडसेट, योर ओन टेम्परामेंट कम्स इनटू प्ले। अब आपको ये देखना है कि गिविंग मॉक्स डज इट हेल्प यू? मॉक्स आर सपोज टू बी प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है, एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए आपको मदद करे कि 2 घंटे में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी आपकी वर्क कर रही है या नहीं करती है, वेदर देयर इज एन इनहेरेंट फ्लॉ इन इट, टू फाइंड दोज गैप्स इन योर प्रेप, वो डिटरमाइन करने के लिए होता है। It's not a race that, dude, I gave 50 marks before the CAT exam. How many did you give? सामने वाला saying मैंने 75 दिया, तीनों बड़े इंस्टीट्यूट के 25 25 25 दिए, सामने वाला आके चक्कर आके गिर गया बेचारा, 75 मार्क्स। ओके, तो प्लीज कीप इन माइंड, इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल डिसीजन। ओके, कंप्लीटली पर्सनल। आपको देखना है कि मॉक्स का कितना क्वांटिटी देकर आपका माइंडसेट, आपका टेम्परामेंट, आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छी रहती है। All right, you can be somebody who wants to give mocks only once a week, maybe on the weekend, analyze it over the weekend, end of story। बाकी 5 दिन क्या कर रहे हो भाई? हम पढ़ाई कर, ठीक है, आई एम सॉल्विंग दिस दैट डे, दिस सो मच, दैट सो मच, बहुत अच्छी बात, completely, I completely support your approach, as long as you have made it completely, independent। All right, so please do not obsess over questions like should I give mocks daily, should I give them on every alternate day, वगैरह वगैरह वगैरह। Rather, personally, if you want my 2-bit opinion on this, I would strongly recommend against this। क्यों? क्योंकि first of all, I have never come across an aspirant who has benefited from giving so many mocks। Secondly, होता ये है, there is a very solid potential drawback from giving so many mocks is, this is like, आप देखो अगर बीमार गिरते हो, if you let us say you keep on getting cough, cold and fever and you keep on taking डोलो 650 पैरासिटामोल इतने डोजेज में, तो एक लिमिट आएगा कि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट भी इम्यून हो जाती है, राइट? इवन 650 mg डजंट सीम टू हैव अ सॉलिड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। इसके लिए एक मेडिकल टर्म भी है और आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट, बट यस, द बार कीप्स ऑन मूविंग ऊपर ऊपर ऊपर। तो आप अगर हर रोज मॉक दोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये माइंड गेट्स डिसेंसिटाइज्ड टू दैट 2 hour फॉर्मेट। तो एग्जाम में कहीं पे सरप्राइज आ गया ना आपके रास्ते में, तो इंस्टेड ऑफ दिस मॉक्स प्रिपेयरिंग यू टू हैंडल दैट अनसर्टेनिटी प्रॉपरली, कहीं ना कहीं आप अपने फिक्स्ड स्ट्रैटेजी में, कहीं ना कहीं एक ब्लिंकर्ड माइंडसेट में फंसे रहोगे कि नहीं, मैंने तो 30 मॉक्स ऐसी स्ट्रैटेजी से दी थी, तो मैं एग्जाम भी वैसे ही दूंगा। नो, कहीं पर भी देखो, कीप इन माइंड, इट इज नॉट एच्ड इन स्टोन एनीवेयर कि कैट का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। एवरी 6 7 8 years दे लाइक टू शेक थिंग्स अप। ओके, कि चलो पैटर्न बदल दिया, टाइम कम ज्यादा कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए, एंड कंप्लीटली ये तो एग्जाम सेंटर का फ्रीडम है। तो इफ यू हैव constrained yourself, if you have bound yourself into a particular template, no matter what happens, so that is going to once again backfire on। ठीक है, तो गिव मॉक्स, रादर डेली नहीं, हेल्दी तरीके से। एंड व्हाट इज हेल्दी? तो लाइक विथ योर फिजिकल हेल्थ, दिस आल्सो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ठीक है, किसी किसी को हफ्ते में 2 मॉक्स बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, किसी को ओनली वंस, किसी को मे बी मोर देन दैट, कंप्लीटली योर कॉल। ठीक है, what I recommend as a good rule of thumb is something like at this stage, so let me clear up the screen। uh, मैं इस स्टेज पे एक्चुअली, रादर देन कितने मॉक्स दिए, मैं वॉल्यूम ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। माय फोकस इज व्हाट यू डू ऑन अ डेली बेसिस रादर देन पीरियोडिकली, लाइक एवरी अल्टरनेट डे और वीकली वंस ट्वाइस। वो क्या हो रहा है ना, उससे स्पाइक होता है कि मे बी द डे दैट यू गिव अ मॉक यू आर इन अ वे स्पाइकिंग योर परफॉर्मेंस, ऑन अदर डे इट इज फंक्शनिंग ऑन अ लोअर एंड, वैसा नहीं। माय फोकस इज लाइक कि आपका परफॉर्मेंस लेट से शुड बी मोर लाइक दिस, या फिर चलो ठीक है थोड़ा सा 19 20 ऊपर नीचे। what people generally do is ऐसा। so I find this pretty unhealthy, this highs and lows like this। ठीक है, so that being said, what I believe you should be doing every day for the next 30 40 days is कि have a really good volume of practice, at least 4 to 5 6 RCs every day। and you must be like कि हाँ इतना तो कर ही लेते हैं हम। here comes the important part, one sitting।
एक बैठक में करना है। वाई यू माइट बी लाइक एग्जाम में तो 4 ही आते हैं, हम उसमें भी 4 कहाँ करने हैं हमको। तो रीजन ये है एंड्योरेंस। ओके, व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ टू हैंडलिंग 6 RCs इन वन सिटिंग, तो कहीं ना कहीं उतना आपका मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। एग्जाम में ऑफकोर्स आपको 2 3 या 4 आपके ऊपर डिपेंडेंट है कितना करना है। बट एक कहावत है ना, अगेन वंस अगेन आई लाइक टू मेंशन कहावत हियर एंड देयर, कि bleed in practice so you don't die in the battle. Same thing here. So bleed in practice, solve 6 RCs every day. Sometimes it might frustrate you. तो एग्जाम में आप सफर नहीं करो। Another statistical reason, another logical reasoning why you need to solve 6 RCs daily is what? There are people who say कि नहीं इतना नहीं होता यार, हम ना दिन के 3 कर सकते हैं सर, बेस्ट वी कैन डू इज 3 RCs in a day। तो इसमें पता है एक पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या होता है, that on a bad day what can happen is that your 2 RCs get blown up where you perform really bad like 1 on 4, 1 on 3, something like that, and just 1 RC goes good। तो उस दिन क्या होता है, if you have been solving only 3 RCs in a day and this is a completely natural outcome where 2 RCs get blown up where you perform really shoddy तरीके से, तो मोरल आपका डाउन हो जाता है, इट हैम्पर्स योर कॉन्फिडेंस। सो व्हेन यू सॉल्व मिनिमम 6 RCs इन अ डे ना, तो ये जो बायस है कि भाई 3 में से 2 ऑनेस्टली बहुत टफ निकल गए थे इसलिए आपके ब्लो अप हो गए, तो दैट काइंड ऑफ बायस गेट्स टेकन केयर ऑफ। आप 6 करोगे उसमें से घटिया पैसेज आरसी पैसेज 2 3 रहेंगे ना, रिमेनिंग 3 तो डुएबल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आउटकम विल ऑल्सो कम आउट इन अ वेरी स्टेबल मैनर, दैट ये 3 4 RCs वेंट रियली वेल, 1 2 RCs मे बी गेट ब्लोन अप। तो कहीं ना कहीं दैट विल कीप योर कॉन्फिडेंस इंटैक्ट एंड ऑल्सो कीप योर फीट ग्राउंडेड एज वेल। वही ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम ये भी हो सकता है आप दिन के सिर्फ 3 करते हो, तो इफ दोज आरसी पैसेजेस आर इजी तो ऑल 3 आपके सही हो गए, तो यू आर लाइक बस अब गॉड कौन भी आरसी का मैं ही हूँ। ओके, आई फील लाइक गॉड। तो ये भी गलत है। तो एज यू कैन सी, ये जो स्विंग्स होते हैं मूड में आपके टेम्परामेंट में, तो दो स्विंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली फ्रॉम दिस 6 RCs a day format। All right, so try to solve this 6 RCs from decent sources, maybe past year previous year question papers, उनके तो video solution भी काफी सारे I have been trying to put on the channel। Please consider going through those if you haven't। solve करो 20 21 22 कैट के सारे आरसी पैसेजेस, तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी वेर यू स्टार्ट। ऑल राइट, सेकेंडली डिटरमाइन करो कि आपके कौन से जॉनर ऑफ आरसी पैसेजेस अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन, कि व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, या फिर चलो पॉलिटिक्स भी बोलना गलत है, सोशल साइंस टाइप जो पैसेजेस आते हैं where maybe we are discussing something about history, something about politics, society, anything, so I am good here। but when it comes to really abstract, एकदम ही abstract philosophy passage अगर आ गया, तो I am pretty weak over here। तो व्हाट दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इज कि एग्जाम में आपके सामने पैसेज किस तरह से आ रहा है, तो यू विल बी अवेयर कि अच्छा दिस इज माय स्ट्रॉन्ग एरिया, दिस इज माय वीक एरिया, तो दैट कैन हेल्प यू गेज द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू टेक। तो द जर्नलिंग दैट आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स अगो, जिस तरीके से आपको आपके मॉक्स का जर्नलिंग बनाना चाहिए, आई स्ट्रांगली रिकमेंड मेकिंग अ जर्नल ऑल्सो लाइक दिस फॉर योर डेली प्रैक्टिस ऑल्सो। कि आप आरसी नंबर 1 लिखते जाओ यहाँ पे, RC1, नंबर 2, नंबर 3, so on so forth up to 6। of course there should be date here, let's say the date of all these 6 RCs is, let's say 17th October। all right, and your accuracy is like 2 on 2, maybe here 4 on 4, maybe it's 3 on 4, and so on so forth। तो सामने इसके जॉनर लिखते चलो, where your genre here might be, let's say this might be philosophy, this might be, let's say in my case it will be social science, this might be once again something humanities, जहाँ पे हम लैंग्वेज, म्यूजिक, फोक कल्चर वैसा कुछ डिस्कस करते हैं। तो दिस डेटा वंस अगेन विल स्पीक बैक टू कौन से जॉनर आपके स्ट्रांग है, कौन से वीक है, कौन से टर्म्स आपको शायद नहीं समझ में आते इसलिए आपका पूरा पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन चले गया। तो व्हेन यू फोकस ऑन एक्चुअल टैंजिबल पैरामीटर्स लाइक दिस ना, तब जाके आपको आपकी ग्रोथ में भी फर्क महसूस होगा। डेली मॉक्स देने से कहाँ टाइम मिलेगा ये सब अच्छे से जर्नलिंग करने का। how will you be able to figure out what are your strong areas and what are your weak areas? Giving mocks daily in my opinion is, really trying to get a sugar high every day। जबरदस्ती का एक डोपामाइन हिट आप खुद को दे रहे हो कि हाँ मैं रोज मॉक देता हूँ, अब मैं एग्जाम में बहुत सॉलिड परफॉर्म करूंगा। इट्स अ लाई दैट यू आर फीडिंग टू योरसेल्फ। टिल डेट आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी गुड स्ट्रॉन्ग 99 परसेंटाइलर जिसने ये सब ऑब्सेशंस किए।
ऑल राइट. तो फोकस ऑन द tangibles, फोकस ऑन द fundamentals more. Mocks do up, but in a very healthy frequency. Mocks are meant to strengthen your confidence, not lead you on a wild goose chase or not even spoil you. All right. तो चलो, दैट बीइंग सेड, एक बेसिक मैंने आपको ओपिनियन देने की कोशिश की है व्हाट यू शुड बी डूइंग ऑन अ डेली बेसिस व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम ऑफ प्रैक्टिस. नाउ लेट्स गो टू द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, मॉक एनालिसिस. ठीक है, चलो. ऑल राइट, व्हेन इट कम्स टू नॉट जस्ट गिविंग मॉक्स बट एनालाइजिंग कि आपको मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, व्हाट आर द लेसन्स लेसन्स दैट यू शुड टेक होम, वगैरह वगैरह. So there is this very famous movie dialogue which comes to my mind often, and I see it happening every year with really so many aspirants. Okay, a very famous character actually, Joker from the Dark Knight. And what is the dialogue that he's saying? And you know what I am? I am a dog chasing cars. I don't know what I would do when I get one. ठीक है, तो आप देखते हो ना जब गाड़ी जाती है रास्ते से तो तीन चार पांच कुत्ते लग जाते हैं पीछे भौंकते भौंकते. तो रियली इमेजिन दैट सिचुएशन, व्हाट वुड हैपन दैट इफ दे गॉट द कार टू देमसेल्व्स, व्हाट आर दिस गाइस गोइंग टू डू. सो दिस इज व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ केसेस विद द मेजॉरिटी ऑफ एस्पायरेंट्स, जो मॉक तो दे देते हैं बट उसके बाद में करे क्या उस स्कोर के साथ में ये उनको नहीं समझता. ठीक है, so this is where a bit of gyan I would like to give. Once again, very unconventional opinion I hold with respect to what is the broad opinion out there. So ठीक है, take whatever I'm saying once again with a pinch of salt. If it doesn't suit your temperament, if it doesn't seem to work for you, please ignore कर दो. झगड़ा झगड़ी में मत करना कि अरे उसने तो ऐसा बोल दिया तो मेरा तो ऐसा मानना है, कैसे ही बोल दिया तुमने. प्लीज डोंट डू ऑल दैट. ठीक है, लेट्स बी ऑल एडल्ट्स हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू गिव मॉक्स, तो अच्छे से प्लॉट करो व्हाट वाज योर स्कोर इन आरसी, आरसी 1 2 3 4. ठीक है, ऑल राइट. एक्यूरेसी एंड कितना टाइम लगा, ऑफ कोर्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू प्लॉट द टाइम आल्सो. जनरली पोर्टल्स के ऊपर आपको दिख जाता है व्हाट इज द एवरेज टाइम दैट यू टुक, व्हाट इज सॉरी व्हाट इज द टाइम यू टुक एंड व्हाट वाज एवरेज जनता का वगैरह. एंड देन आल्सो सी हाउ यू फेयर्ड इन समरी, देन पैराजिम्बल्स, एंड मे बी देन अगर आपने वो बचे हुए दो क्वेश्चन जो बीए के हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, अगर वो अटेम्प्ट किया है तो वो. But largely a focus, in my opinion, should lie on analyzing these three aspects, because that fourth one, fill in the blanks, is a relatively very new concept. अभी लास्ट ईयर तो पहली बार आया था, इस साल whether it will make a reappearance or will it give way to some other kind of question, we cannot say. Even there is no guarantee कि समरी और पैराजम्बल भी आएंगे या नहीं आएंगे. अब वो पिछले 6-7 साल से तो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, बट फॉर ऑल वी नो द एग्जाम सेटर माइट डिसाइड टू स्पाइस थिंग्स अप एंड आवर एंटायर डिस्कशन राइट नाउ माइट गो टू वेस्ट. बट ठीक है, अभी क्या करें, जो है वो है, इट इज व्हाट इट इज. ऑल राइट. सो नाउ इन दिस केस, यहाँ पर एनालाइज करो कि आपको टाइम किधर कैसा लगा, आपने सिलेक्शन क्यों किया और कैसे किया. ठीक है, एंड आफ्टर व्हेन यू आर डन थ्रू दिस, तो एक बात आप डिटरमाइन करो कि चलो पकड़ के चलो, लेट्स से इन द सेकंड आरसी पैसेज यू अटेम्प्टेड बट अनफॉर्चुनेटली द स्कोर इज ओनली 2 on 4. ठीक है, यू आर एक्सपेक्टिंग यार मेरा 4 on 4 या फिर इवन 3 on 4 आना चाहिए, एंड देन यू आर स्क्रैचिंग योर हेड, ब्रेकिंग योर हेड ओवर इट, अरे यार दो ही आए, मैं अब क्या करूं. तो प्लीज ट्राई टू डिटरमाइन whether the mistake, whether the error that you made, is it silly mistake in nature या फिर is it a conceptual error that you. डिफरेंस क्या है इन दोनों में. इन सिली मिस्टेक व्हाट इट कुड बी समथिंग लाइक कि यार आंसर सी मार्क करना था, गलती से हमारे हाथ डी पे चले गया और हमने डी मार्क कर दिया. अच्छा ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ अस, जल्दी जल्दी में कहीं गड़बड़ में आपके हाथ से हो गया होगा. सो इट हैपेंस लाइक दैट, सो डोंट ब्रेक योर हेड ओवर इट. रादर टू फॉर द सेक ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, व्हाट यू शुड डू इन सच केसेस इज खुद को +4 अवार्ड कर दो और आगे चलो. अगर आपका स्कोर समझ लो 16 आया होगा एंड यू आर थिंकिंग यार मुझे 22-24 तो आ ही जाने चाहिए, एक सिली मिस्टेक हुई ना, सी की जगह डी मार्क कर दिया जबकि आपका सी मार्क करना था, एंड सी इज द ऑफिशियल आंसर लेट से. तो फॉर द पीस ऑफ योर माइंड ना, अज्यूम दैट यू गॉट 20 मार्क्स. ऐसी सिली चीजों के ऊपर में ब्रेकिंग हेड कि यार 16 ही आए, मुझे तो 24 आने चाहिए थे, अरे यार ये बहुत बोरिंग बातें हैं, ऐसी चीजों में मत फंसो. ठीक है, कभी कभी एक ऐसी मिस्टेक भी कर देते हैं लोग क्वेश्चन में हमारे इन बीआरसी आरसी पैसेज क्वेश्चन,
we get this except wala thing, that all of the following are correct with respect to the passage except, and people in a rush end up missing this word except also. तो honestly speaking, अगर ये बार बार करते हो आप, तो it is no longer a silly mistake, but maybe let's say it happened for the first time, or maybe happens very rarely that you miss this except वाला thing. अगर ये एक्सेप्ट आपको जब बाद में एनालिसिस में ध्यान में आता है एंड यू आर एबल टू डिसाइड, हाँ यार आंसर तो ऑफिशियल आंसर के साथ ये थिंकिंग इज मैचिंग, तो फिर उस केस में ऑल्सो कंसिडर इट एज अ सिली मिस्टेक एंड अवॉर्ड योरसेल्फ +4. हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ गाइस, नो पॉइंट ऑब्सेसिंग ओवर इट. ठीक है. कंसेप्चुअल एरर्स क्या होते हैं? Like this, for example, recently for the past couple of years we have been getting questions like all of the following options if false, and आगे blah 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 something might be written कि will weaken the author's argument या फिर will support blah blah argument, जो भी है. You're not able to handle the question, you're not able to understand it, and still went ahead and attempted it. So that is really wrong. Always keep in mind, this is a very important point that I missed mentioning इसके पहले. देखो, एक ब्रॉड पॉइंटर मैं आपको देता हूँ व्हेन इट कम्स टू आरसी पैसेज. एक होता है पैसेज आपके पास में, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर. एक होता है पैसेज आपके पास में, एंड देन इट इज फॉलोड बाय क्वेश्चंस. तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर आपको पैसेज में कोई पर्टिकुलर वर्ड, इवन कोई पर्टिकुलर सेंटेंस ना समझे, तो भी इट इज ओके. maybe in that one 500 word RC passage, maybe one or two sentences you are not able to understand clearly, chalta hai ek baar ka. You can still have that risk taking mindset and go ahead and attempt the questions. But in any given question, you are not aware of a particular word, be it in an option or be it in the question itself, कि अरे यार ये जो मीनिंग है कैजुअल यूज कर दिया अगर वहां पे किसी ऑप्शन में, कि द ऑथर कैजुअल्स द रीडर टू बिलीव ब्ला ब्ला ब्ला, और आपको कैजुअल्स का मीनिंग ही नहीं पता. तो इट मीन्स परसुएड, स्ट्रांगली परसुएड, कन्विंस. तो अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो माय वर्डिक्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लीज स्किप दैट क्वेश्चन. 4 ही ऑप्शंस है, 4 ही सेंटेंसेस है, और 4 में से एक सेंटेंस का आपको समझा ही नहीं. तो यू योरसेल्फ शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अ शेकी ग्राउंड दैट यू आर ऑपरेटिंग ऑन. ओके. तो ऐसे केस में प्लीज डू नॉट take a lot of risk. If you have not been able to crack the meaning of questions like कि if false आ गया तो अब भाई मैं क्या करूँ ऑप्शंस में, कैसे सिलेक्ट, कौन सा एलिमिनेट, फिर गैस वर्क करके कुछ मार्क कर दिया, प्लीज stay away from this. This is a strong conceptual error. The entire purpose of giving mocks and analyzing mocks is to discover these errors कि आप conceptually कहाँ पे गलत जा रहे हैं. ठीक है. Another conceptual error that you might end up making is something like generalization वाला, कि भाई पैराग्राफ में तो बात सिर्फ यूएसए की हुई है पैसेज में, और ऑप्शन के अंदर लिख दिया एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर वेस्टर्न कंट्रीज प्लूरल. तो ऑल दीज फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ जनरलाइजेशन. ओके. यू शुड बी एबल टू स्पॉट देम नाउ एट दिस स्टेज इफ यू आर इवन अ हाफ डिसेंट बीआरसी एस्पायरेंट. ठीक है. टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन सेइंग कि बीआरसी में सबसे बड़ा आपका दुश्मन कुछ नहीं, जनरलाइजेशन. नंबर 1 एनी, यू शुड बी एबल टू कैच इट एंड रूट इट आउट ऑन प्रायोरिटी. ठीक है. तो अगर ऐसे एरर्स आपके मॉक में होते हैं, यू डिस्कवर कि यार क्वेश्चन ही नहीं समझा फिर भी आई अटेम्प्टेड, ओ माय गॉड, इन सम ऑप्शन इट वाज अ केस ऑफ जनरलाइजेशन बट आई वाज नॉट एबल टू कैच इट. दीज आर कंसेप्चुअल एरर्स, यू नीड टू वर्क ऑन दिस. डोंट ऑब्सेस ओवर सम सिली मिस्टेक्स एंड देन हैव मीनिंगलेस लॉन्ग कॉन्वर्सेशन कि 16 का मैं 24 कैसे कर सकता था मार्क, बट 30 आ सकते थे, क्या हुआ कैसा. कंसेप्चुअल एरर डिटरमाइन करो कहाँ है एंड डिस्कस दोज विथ योर मेंटोर. ओके. अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी पीपल यार मतलब रियली डू नॉट लिसन हियर व्हाट आई ट्राई टू कन्विंस देम. तो क्या होता है, अभी तक के आपने आपकी जो भी एग्जाम दी होती है एट ग्रेजुएशन लेवल, इन 10th 12th, ओके, बोर्ड एग्जाम्स, एनी अदर एग्जाम्स, ओके, वहां पे द थिंग इज कि आप जितना ज्यादा करो, द मोर यू डू द मोर यू स्कोर. ठीक है. तो द मोर यू डू द मोर यू स्कोर, ये एप्लीकेबल ही नहीं है कैट एग्जाम. ठीक है. कैट इज नॉट अ ब्लिट्जक्रीग एग्जाम. इट्स नॉट एन एग्जाम जहाँ पे आप अंधाधुंध जाओ और फट बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जितना ज्यादा हो सके उतना. एब्सोल्युटली नो. It's a test of determining how sound your logic is, how good your decision making is.
LRDI में हम कितनी मेहनत करते हैं, राइट, सेट सिलेक्शन को लेकर, बिकॉज एवरीबडी नोज 4 सेट किससे सॉल्व होंगे भाई, पागल थोड़ी हो गए हम, राइट. सेम थिंग यू शुड बी एबल टू डिटरमाइन इन VRC ऑल्सो. For all you know, VRC carries more questions than LRDI, right? Okay. So same approach, at least same mindset you should have, that all 24 questions are not expected to be solved by you. Quant में बात अलग है. Quant में क्या होता है? In quant, what you have is 22 questions, and there are really good smart people out there who are able to solve 19-20 questions with a very solid pace, with a lot of confidence, and they get all of them correct. So getting people who are like 55 and getting 60 marks in quant, this is normal. You will find repeaters, or you will find seasoned tutors who are able to notch this up. But nowhere in VRC you will be able to find where people, let's say VRC mein somebody who is, been a tutor for the past 10-12 years. So you won't be able to find people are attempting 22 questions there and getting like 19-20 of them correct. Extremely few, maybe 1 in 1 lakh, 2 in 1 lakh. Yeah, that's it. That's it. For the vast majority out of us out there, the number of attempts have to be really very controlled. तो इस प्रकार के attempts कोशिश करना VRC में wrong expectations, rather even wrong approach. The section will trip you up. I can give it to you in writing. It's my assurance to you openly out here on this platform on YouTube. ठीक है? So that being said, be very pragmatic when it comes to deciding selection. ठीक है, but anyway, the part that we are discussing right now, ये exam strategy हो गई, ये हम बाद में maybe in a separate video करेंगे. Coming back to mock analysis, what you should keep in mind is, do not expect consistency in scores, and this is extremely massively applicable in VRC of all the things. In quant थोड़ा सा playlist predictable होता है, that okay, so many questions from arithmetic, so and so question from geometry, so and so question from algebra will come. तो आप ये नहीं वो नहीं, ये स्ट्रांग है कम ज्यादा है, तो आप वहाँ पे प्रेडिक्टेबल रख सकते हो कि नहीं, मुझे कुछ भी करके 10 12 14 तो उसमें सॉल्व करने ही है क्वेश्चंस. बट व्हेन इट कम्स टू VRC, एवरीथिंग यू आर एट द मर्सी ऑफ द जॉनर एंड द टॉपिक ऑफ RC पैसेज. ये VRC might be good, okay, conceptually good, but what if I as a mock setter decide to mess with you and give all 4 RC passages completely abstract in nature? जा रहा है सब कुछ बाउंसर, बड़े मुश्किल से पर पैसेज एक या दो क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है. तो ऐसे केस में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर स्कोर टू बी इन द जोन ऑफ लेट्स से 30-35 मार्क्स? So people often end up complaining that यार previous mock में तो मैं 30 आया था, now in this mocks we have only 18 marks, तो ये क्यों हो गया? It's okay. All right, keep in mind, personal मेरी लाइफ का मैं एग्जांपल देता हूँ. My brother in law, he is an IIM Bangalore graduate. Okay, so his last CAT mock about 10-12 days before the CAT exam, in that mock exam, you know, frankly speaking, he scored 55 percentile. Imagine that. Okay, and he made it to IIM Bangalore as a fresher. But yes, the last mock that he gave 10 days before the exam, his percentile is at 55. Now if he had taken this score to his heart, तो एग्जाम में क्या ही परफॉर्म कर लेते ना, अरे यार मेरा तो 55 आ गया, अब मैं क्या ही कर लूंगा, व्हाट गुड एम आई. नो, स्टॉप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ ऑन सिली थिंग्स लाइक दिस. ओके, अगर आपको मॉक स्कोर में 35 भी आ जाए, 60 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इट विल बी लाइक अ मैड डॉग गेटिंग अ कार. क्या कर लोगे उस मॉक स्कोर पर? आवर गोल इज टू गेट really solid accuracy and a solid percentile in exam, not in mocks. That is the real goal. ठीक है, तो स्टॉप ओवर एनालाइजिंग, स्टॉप ओवर डिस्कसिंग इट समबडी कि मेरा पिछले मॉक में 30 था, इस बार 18 आया, अगले मॉक में आई एम टारगेटिंग 25. दिस इज बुलशिट स्पेकुलेशन. ठीक है, प्लीज डू नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ स्पेकुलेशन. वंस अगेन, यहाँ पे जैसे कि अगर समझ लो कंसिस्टेंटली, लेट्स से इन VRC you have been getting 25 plus in any kind of mock that you give, so it doesn't mean that in exam also you will be getting this. For example, a student of mine some days ago said that IMSK VRC is considered tougher than the main exam, but even there I've been able to get 25 plus consistently. So in exam I think I'll cross 40 easily. For a moment I really did a literal face palm, frankly speaking. Speculation क्यों कर रहे हो? If you want to do speculation, go and trade in futures and options, boss. Okay.
Just stick to the fundamentals. Okay, be okay with volatility, be okay with your score sometime becoming 30, sometime maybe blowing up 18, all of that, because you're not a machine, you're a human. Okay, so mental performance also varies day to day. What you should be doing is keep a really good track of RC का accuracy आपका and the time that you take. तो टाइम पर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपका एवरेज टाइम पकड़ के चलो 10 मिनट्स निकलता है पर आरसी पैसेज, तो दैट विल हेल्प यू मेक अ रियली गुड जजमेंट इन द एग्जाम। कि अगर गलती से आपका बहुत डिफिकल्ट स्लॉट अगर आ गया, तो शुड यू बी टारगेटिंग 3 RCs इन दैट मोमेंट, या फिर जस्ट सेटल फॉर 2 RCs एंड देन मे बी टेक अ लुक एट VA, बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट द VA साइड माइट बी इजियर बिकॉज द RCs आर सीमिंगली क्वाइट अनक्लियर। तो होता है, एंड व्हेन विल यू बिकम अवेयर ऑफ थिंग्स लाइक दिस, व्हेन यू फोकस ऑन फंडामेंटल्स लाइक दिस ऑन योर ओन। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। कंसिस्टेंसी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉक स्कोर्स कंसिस्टेंसी डू नॉट एक्सपेक्ट। हम 10th 12th के लिए जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अ वास्ट मेजोरिटी आल्सो गिव जेई नीट बैक इन द 12th स्टैंडर्ड एंड ऑल, तो उसमें एक आदत लग जाती है कि हाँ भाई हम तो हर एग्जाम में हर फुल लेंथ मॉक में इतना इतना तो निकालते ही थे, यहाँ पे भी वैसा होना चाहिए। नो, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम दैट यू आर प्लेइंग। इट्स नॉट इवन अ डिफरेंट फील्ड, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम विद टोटली डिफरेंट रूल्स। ऑल राइट, अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू से इज कि कंपेयर मत करो खुद का परफॉर्मेंस दूसरों के साथ। दूसरे इंसान का जर्नी कंप्लीटली डिफरेंट, नो मैटर हाउ क्लोज दैट पर्सन माइट बी टू यू एज ए फ्रेंड और एज अ colleague or even as a relative. All right, and then lastly my opinion regarding experts का live mock solving, regarding that I am completely क्या बोलेंगे ना agnostic sort of, कि for me the jury is still out on that. There are some people who say yes we benefited from it, there are some like me, if you share my temperament we are like ठीक ही है, ओके। तो completely depend करता है कि how you have been preparing regarding your own exam. If you are someone like me, so I like to keep my preparation very personal. Okay, I will not share a lot of things with somebody, nor will I want somebody's opinion meddling with my thought process. All right, but there might be somebody who can gain from this live solving mock taking videos वगैरह। maybe you are making a strategic mistake somewhere, तो शायद आप किसी सीनियर ट्यूटर का वीडियो देखकर आपकी वो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक ठीक हो जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो चलो बहुत अच्छी बात। So regarding this, I am saying once again, don't obsess over it, because the person who is taking that live mock before you on the screen, उनका कुछ भी नहीं है, nothing is at stake for them. Okay, but in exam for you, everything is going to be at stake. Your 8, 10, 12 months of prep. So the kind of pressure that you are in that moment, the kind of expectations that you hold from yourself, completely different ball game as compared to what is going on in a live mock solving. ठीक है, तो इसीलिए टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन सेइंग कि कीप योर फीट ग्राउंडेड, कीप योर फोकस ऑन फंडामेंटल्स। ठीक है, तो चलो दैट बीइंग सेड, तो दिस वाज माय 2 बिट ओपिनियन रिगार्डिंग ऑल दिस एनालिसिस, ऑल दिस अप्रोच स्ट्रेटेजी फॉर द लास्ट 40 days। अभी एक मैंडेटरी थोड़ा मोटिवेशन तो देना ही पड़ेगा ना बॉस, जब इतनी कंट्रोवर्शियल बातें कर दी है, इतना डीमोटिवेट कर दिया है, और अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने रह चुके हो, तो mandatory motivational poster. Actually, I'm a massive fan of the movie Rocky, and if you haven't watched it, I would recommend कि एग्जाम हो जाने दो फिर रॉकी देखना। बहुत अच्छी मूवी सीरीज है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऑल राइट, सिल्वेस्टर स्टैलोन रियली गुड गाय। ऑल राइट देन, चलो इनफ ऑफ ज्ञान, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज like this video, and let me know what you would like to see in the coming days in the comment section. ठीक है, चलो then, till then, tata, bye bye, take care, and I'll see you in the next one.